So join your hands, close your eyes. Let us chant Omkar 3 times, then we shall begin. Om. Om. Sairam. Okay. Sairam, am I audible? Sairam. Yes, sir. Yes, sir. Sairam sir. Yes, we have completed uh, the first chapter or second chapter, that is the change in profit sharing ratio among the existing partners. Okay. So the broad topic is reconstitution of partnership. No? The broad topic is the reconstitution of partnership. That means a change in the agreement between the partners, that is considered as reconstitution of partnership. So whenever partners make changes in their partnership agreement or they change the terms and conditions of partnership, that is considered as reconstitution of partnership. Technically, it means that the partners change their old partnership deed, or partners make changes in their partnership agreement or partnership deed. So this change in partnership agreement or partnership deed is considered as reconstitution of partnership. Okay. So first condition of reconstitution of partnership we have discussed, that is the change in profit sharing ratio among the existing partners. In this condition, neither any new partner comes in the firm nor any partner leaves the firm. Okay. So whatever partners are already there, they decide to change profits or losses in future in a different profit sharing ratio. So that we discuss it impact, or it is to be recorded to give effect. Number one, because of the share of profit is given by some partners to one or other partner, so they are to be compensated for that sacrifice that is done through the goodwill. Then there may be certain reserves or provisions, undistributed profits which are earned on the previous terms and conditions. So before new terms and conditions are applied, these profits and losses are to be adjusted or distributed. And partners can also decide to go for revaluation of assets and reassessment of liabilities. So in future, because profit sharing ratio will change, it also means that their proportionate ownership of liabilities and assets will also change. So before changing their profit sharing ratio, they also go for evaluation of assets and liabilities. That's why they do revaluation, and we adjust either passing the adjustment revaluation entries if the partners decide to change the values in the balance sheet, or we can give effect by calculating the net profit or loss on revaluation, and that profit or loss is adjusted in the partners capital account. Second condition of reconstitution of partnership that we are starting today, that is a very important chapter, and many portions of this chapter we have already covered. You know? Am I audible, Sairam? Yes, sir. Yes, sir. So this chapter is, I consider this is the basic chapter of partnership. If this chapter is clear, the all chapters you can solve. In first chapter will be more clear after studying this chapter. Chapter of retirement and death will also be clear. That is also based on this chapter. You know? So this is the most or core chapter of partnership. That is the admission of a partner. You know? Admission of a partner or admission of a new partner. So admission of a partner simply means if the partners decide to admit a new partner or new person in the firm, that is considered as admission of a partner. So as we know, in a partnership firm, the minimum number of partners is what? Earth. What is the minimum number of partners in a partnership firm? Sairam Karthik. Sairam sir. Parth. Minimum number of partners in a partnership firm. Parth, are you there? Parth, answer the question whether right or wrong. No problem. Yes, please.
पार्थ कावरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अब दोबारा ज्वाइन किया। हाँ पार्थ, साईराम। Sir. I asked that what is the minimum number of partners in a partnership firm? Sir, 2. Yes, very good. 2. Minimum number is 2. Deepanshi is here today. Yes, sir. Deepanshi, welcome to our class. Deepanshi, are you there? Yes, sir. After a long time, you are here ultimately. So welcome to the class and be regular now, है ना? अब regular रहना है आपको. Okay. Yes, sir. So, Deepanshi, what is the maximum number of partners in a partnership firm? What can be the yes, please. Any number that you can guess. Minimum is 2. It's not maximum. Minimum is 2. What is the maximum number? 50. हाँ जी, 50. 50. 50. Karthik, is it right or wrong? Karthik, Deepanshi is right or wrong? Sir, right, sir. Okay, 50. good, Deepanshi. So minimum number of partners is 2, without which a partnership business cannot be started, because partnership comes into existence by an agreement, and one single individual cannot make an agreement with himself or herself. So at least there must be 2 persons, and according to Indian Companies Act, not by the Partnership Act. Remember, now do you know this fact that maximum number of members in a partnership firm are decided not by Indian Partnership Act but by the Indian Companies Act. Okay, so this is important question for your exam also. So that according to Indian Companies Act 2013, the maximum number of partners in a partnership firm normally is allowed 50. You know, so when a question is asked that what is the maximum number of partners in a partnership firm, then our answer is 50. In exceptional situations, it can be extended up to 100, but that is not a normal condition. So if this question is asked that what is the maximum number of partners, or what can be the maximum number of partners in a partnership firm, our answer will be 50. Okay, so now we are discussing about admission of partner. So suppose two partners started a partnership business, and after some time they feel that we should admit one more partner in a partnership business, then they can do so. You know, they can admit a new person. Condition is that according to section 31 of Indian Partnership Act, if there is a partnership deed and there is a provision in the partnership deed that a new partner can be admitted, then the partner can be admitted according to the terms and conditions given in the partnership deed. And if there is no partnership deed, or this clause is not mentioned about the admission in partnership deed, in that case a new partner can be admitted in the partnership firm with the consensus of all partners. Remember what I'm saying, not majority decision, it's a consensus decision. If all partners are agree, then a new partner can be admitted in the partnership firm. Okay, is it clear, Sairam? Yes, sir. Yes, What is sir. decision? Not a majority decision. Can you understand this difference of majority decision and consensus decision? What is the difference, Siddharth? Siddharth, are you there? Yes, Siddharth is there. Siddharth, can you differentiate these two conditions? When we say majority decision, yes, please. Sir, can you repeat the question? When we say a decision is to be taken with majority or consensus decision, you know, what is the difference in these two terms? Sir, majority decision is, sir, when all partners is agree. Okay, and consensus decision, Sir, it's not a majority decision. it's not a majority decision. Okay. Ansita Sahu, can you answer this question? Ansita. Ansita, can you hear me? No, Ansita is not there. Then Kesav Tapadia. Kesav. Kesav, can you hear me? Yes, please. Sir, consensus require majority and minority decision, Okay. where majority requires only decision from majority members. Okay. So this idea is not clear. RC, are you there? RC.
Percy not there. Percy is absent today, I think. No. No. Okay. This. Niyati, can you answer this? Niyati. Majority members are added like the partner. Okay. So let me explain it. So when we say majority decision, suppose there are 3 partners in a partnership firm. Okay. Then they all, out of 3, if 2 partners are agree. No, out of 3, 2 partners are agree. That will be a majority decision. No. And when we say consensus decision, it means that all partners must be agree. No. Suppose there are 10 partners in a partnership firm, and if 9 are agree and one is not agree, 9 are agree, it's a majority decision, but it's not a consensus decision. So if even any one partner does not want that this person should be admitted in the partnership firm, that person cannot be admitted in the firm. Is it clear? Sairam? Yes, sir. So majority decision means if majority is agree, then it can be done. Consensus decision means each and everyone must be ready, then that partner can be admitted. So here a partner can be admitted in a partnership firm with a consensus decision, means if all partners are agree, then a new partner can be admitted in the partnership firm. Okay, so this is the first condition. Admission of partner means admitting a new person in a partnership firm in already existing partnership firm, in a running partnership firm. Okay. What are the conditions of admission? Number 1, if there are certain clauses in partnership agreement, partnership deed, if partnership deed allows, then partners can be admitted in the firm. If there is no provision in partnership deed, in that condition, it can be admitted with the consensus or if all partners are agree. This is the one thing. Then second thing, whenever a new partner comes in the firm, he gets 2 important things or rights, rights of a new partner. In addition to many other things, 2 important rights the new partner get in the new firm, which are important for accounting purpose also. The first one is that the new partner get the right to share the profits. First right he gets right to share the profits, and second right he gets right to share the assets. Are you understanding? Sairam? Sairam? Am I there in the class or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I doubt you don't respond. So what right does a new partner get? First right to share the assets of the firm and right to share the profits of a firm. What is the meaning of that? Suppose A and B are partners, equal partners in a firm. Okay, it means that what is the meaning? Whatever assets are there in the firm, who is the owner of these assets? Partner. Partner. Means what names I given? What names I suggested? A and B. And what is the ownership of these 2 partners? कितना कितना प्रॉपर्टी किसकी होगी पार्टनरशिप फर्म की? Sairam? No one can answer. What I said, what is the profit sharing ratio? Equal profit sharing ratio between the A and B. That means 1:2, 1:1, 1/2, 1/2. So what will be the ownership? They will be the owner of assets, equally owner, 1/2, 1/2. So that profit sharing ratio means not only sharing profits and losses, but that also indicates that for what proportion you are the owner of the assets of the firm and you are liable to pay the liabilities of the firm. Okay. So whenever a new partner comes in the firm, as soon as he becomes a partner, he also becomes the owner of the assets for his share. Whatever share is given to him, up to that extent, up to that share, he will also get the ownership in the assets of the firm. And definitely he will also be responsible for payment of liabilities up to that extent, or even sometimes more, because in partnership the liability is unlimited. So to share the assets of the firm, partner brings capital. Sairam, please be careful. Listen carefully. What I am saying?
तो why does a new partner bring capital? This may be a question. नया पार्टनर कैपिटल लेके क्यों आता है? तो new partner brings capital to share the assets of the firm. Okay. If we are asked in the question, calculate the capital to be brought by the new partner, then how do we calculate? On the basis of his profit sharing ratio. So he brings अच्छा. on the basis of his profit sharing ratio. So new partner brings capital for what? To share the assets of the firm. Okay. Second important thing that new partner gets is the share of profit. He also gets a share in the profits of the firm. And this share was with old partners. Do you understand what I said in this question? A and B are partners. So whole profit is going to whom? Whole profit of the Partners. which partners? Not say partners. Which partners are there? A and B. A and B. So whatever profit is there, that is shared by A and B only. Now suppose C is also admitted. Now who will share the profit? A, B, C. A, B. C को जो भी प्रॉफिट मिला वो कहां से आया? Sir, their share of profit. No, it is given by old partners. Remember, whatever share a new partner gets, that is sacrificed by old partners. Because let us understand, how many partners are there? Suppose 2, A and B, and their profit sharing ratio equal profit sharing ratio. That means 1:1. What is the meaning of 1:1? 1/2, 1/2. Pairam, are you understanding? Yes, sir. Now a new partner is admitted C. Again, profit sharing ratio is equal 1:1:1. Now this 1:1:1 is same meaning as it was earlier. इसका मतलब बराबर सेम है कि कम ज्यादा कुछ हुआ? पहले भी 1:1 था 2 में, अब 3 में भी 1:1:1 है, तो कुछ कम ज्यादा हुआ कि उतना ही रहेगा? सबका बराबर ही है, पहले भी उनका उतना था उतना ही रहेगा. पैराम चेंज हो जाएगा सर. क्या चेंज हो जाएगा बोलो? प्रॉफिट शेयरिंग सर कम हो जाएगा. कितना चेंज हो, क्या चेंज हो जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग. Profit sharing. हाँ, क्या चेंज होगा बताओ? सर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और न्यू पार्टनर गेन करेगा. नहीं, वो तो होगा, ठीक है. तो क्या हुआ चेंज? अभी पहले भी 1:1:1 था, अभी 1:1:1 है, तो फिर क्या चेंज हुआ? सर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. नहीं, शेयर में क्या चेंज हुआ? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले भी 1:1 सर था. पहले 1/2 था, लेकिन अब 1/3 और 1/3 हो गया. Yes, this is the correct answer. Earlier it was 1/2. Now it is 1/3. So 1/3 is more or than 1/2 or less? Yes, sir. 1/3 is less, है ना? So what effect you can see? A and B earlier was getting the share of 1/2. Is it clear? But now their share has become 1/3. It means that the share of A and B has been reduced, and that reduced share is given to C. Is it clear? Pairam? Yes, sir. It means what we can say, whatever share is sacrificed by A and B, that is gained by C. In other way, we can say, actually C is buying his share of profit from A and B. Is it clear? Pairam? Yes, sir. Because whole Yes, share sir. पूरा share किसके पास था? Suppose let us take an example. Total number of mangoes are 100. टोटल नंबर तो 100 ही रहने वाला है. मैंगोज का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते. और टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज 50 मान लो. चलो 50 पार्टनर्स है, 50 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आर 50. नाउ देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, इक्वल पार्टनर्स. तो दोनों का शेयर कितना कितना आ रहा है? ईच पार्टनर विल हैव द ओनरशिप ऑफ 25 मैंगोज. 25 मैंगोज. दिस प्रॉफिट इज द मैंगो ईयर, है ना. लेट अस मेक दिस प्रॉफिट मैंगो, है ना. सो 25 मैंगोज of A and 25 mangoes of B. Is it clear? Yes, sir. उसको 60 करना पड़ेगा. 50 में दिक्कत आएगी क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा कुछ 3 से, है ना. पॉइंट में आएगा, हम पॉइंट में नहीं चाहते. 60 मान लो. 60 मैंगो का टोटल, एंड ए के पास 30 है और बी के पास 30 है. अब सी आ गया. सी इज ऑल्सो 1/3 शेयर. अब सी को भी प्रॉफिट चाहिए उसको, तो सी को
इक्वल मैंगो चाहिए इसमें 60 में से। सी को इक्वल मैंगो देने को कितने हो गए हर एक के पास में? 20 20 20। सही राम, इज इट क्लियर? हाँ भाई बोलो। Yes, sir. आप इफेक्ट Yes, sir. समझो, Yes, sir. आप इफेक्ट समझो। पहले ए के पास कितने मैंगो थे? 30 थे ना? सही राम। Yes, sir. बी के पास कितने थे? बी के पास कितने थे? 30 है ना? और सी तो था ही नहीं, तो सी के पास कुछ नहीं था, 0 मान लो आप उसको। अब सी के पास कितने आए? 20 20। और 20 कहाँ से आए? अब ए के पास कितने बच गए? 20. मतलब 10 चले गए ये से, ठीक है। बी के पास कितने बचे? 20. तो बी से कितने चले गए? 10, 10 है ना? यानी वॉट एवर नंबर ऑफ मैंगोज ही हैज बेसिकली गॉट फ्रॉम ए एंड बी, 10 फ्रॉम ए एंड 10 फ्रॉम बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? सी ने 10-10 मैंगो दोनों से खरीदे, और खरीदते हैं तो क्या होगा? यू हैव टू पे प्राइस फॉर इट। कोई चीज फ्री में तो मिलती नहीं है ना? तो दिस प्राइस हु विल पे? C बायर पे द मनी और सेलर्स पे द मनी। कौन पेमेंट करता है? जो खरीदने वाला वो देता है पैसा कि बेचने वाला वो देता है? खरीदने वाला खरीदने वाला। खरीदने वाला कौन है यहाँ पर इस एग्जांपल में? C सी। So C will pay money for whom? Whatever share he has got or mangoes he has got, from whom he has got? A and B, है ना? तो that is called goodwill premium. Goodwill or goodwill for premium. Premium for goodwill, सॉरी, goodwill और premium for goodwill, इसको बोलते हैं प्रीमियम। गुडविल कह सकते हो अकेला, इट कैन बी कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर हियर, है ना? गेनिंग पार्टनर कौन होगा यहाँ पर? है ना? अब वो चला गया कि कोई गेन करेगा। इसमें भी एक आध क्वेश्चन में पुराना पार्टनर भी गेन करेगा, आएगा कंडीशन, बट नॉर्मली 99% केसेस द गेनिंग पार्टनर इज द न्यू पार्टनर। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट द न्यू पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द old partners for their sacrifice. For that, the new partner brings goodwill or goodwill premium. So why does a new partner brings goodwill? To compensate the old partners for their sacrifice of profit. Or directly you can answer this question. New partner brings goodwill to share the profits of the firm. ठीक है? Is it clear? Sairam? Yes, sir. What I said, what are the rights given to the new partner? Of what rights does a new partner get in the partnership firm? So you can say new partner gets, number one, right to share the assets, and second, right to share the profit. Is it clear? Second question, why does a new partner bring capital? The answer is new partner brings capital to share the assets of the firm, because he will be the owner of the assets of firm also. Then he has to pay proportionate amount, that is the capital of the firm. Okay. So new partner brings capital to share the assets of the firm. Why does a new partner bring goodwill or premium for goodwill? New partner brings goodwill or premium for goodwill to share the profits of the firm. He will be the shareholder in the profit of the firm. That's why he brings goodwill, so he can compensate the partners who are sacrificing their share of profit in favor of a new partner. Is it clear? Any doubt you can ask? सर हाँ जी, बोलिए। सर अगर कोई नया पार्टनर आता है और सर वो कैपिटल नहीं ला पाता है वो अभी मत बात तो करो, सर आगे उसको मत क्या जाओ, अभी आगे मत जाओ। अभी मैं जब बात कर रहा हूँ उतनी बात करो अभी। डोंट कंफ्यूज अदर्स, है ना? अभी आपने पढ़ लिया इसलिए आगे मत जाओ। अभी मैं जितनी बात बताई उतनी बात करो, तो नहीं लाता वो बात की बात करेंगे। नहीं सर जो आपने अभी सर बोला उसी से पूछ रहा हूँ सर। हाँ बोलो। तो सर उसे असेट्स लायबिलिटी का वही पूछ रहा था कि शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो मैं भी कितना बताया आपको कि वो क्यों लाता है। वो नया पार्टनर कैसे बनाओगे बिना कैपिटल? क्या पता मुझे। नया पार्टनर कैसे बनाओगे अगर वो कैपिटल नहीं लाएगा? तो कैसे शेयर बनाओ? विल यू एडमिट इन योर बिजनेस संबंध? सर अगर हमारी म्यूचुअल अरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ी काम सब करती है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। म्यूचुअल अंडर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग?
यू कैन हैव द एम्प्लॉय, है ना, आप एम्प्लॉय बोलो नौकरी करो हमारे, तनख्वाह ले लो उसके बोलते। प्लीज साईराम। व्हाट हैपेंड सिद्धार्थ? यस हाँ सर। बोलो। सर आ गया सर। भाई क्या होगा? एनीवन एल्स? ओके, so new partner brings capital to share the assets of the firm. Goodwill in cash सर आपकी आवाज कट रही है। and second one is the right to share the profit. Clear to all of you? साईराम। सर आपकी आवाज बार बार कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? ओके मैं इसको पास करता हूँ। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, वो सो व्हाट आई आस्क सिद्धार्थ, नाउ आस्क योर क्वेश्चन। आपने कुछ पूछा था, रिपीट करो उसे अब। सर मैंने यही पूछा था कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर दो पार्टनर्स के बीच में है तो वो बिना कैपिटल से बुला सकते हैं। अगर उसने कैपिटल नहीं दिया तो आप अपनी प्रॉपर्टी दोगे उसको, शेयर करोगे प्रॉपर्टी उसके साथ में? सर हाँ जी। सर अगर उसमें कोई स्पेसिफिक स्किल होगी तो? हाँ जी। सर अगर उसमें कोई स्पेसिफिक स्किल हो जिससे हम अपने बिजनेस में उसे ले लें तो हमें फायदा हो। स्पेसिफिक स्किल हो तो आप उसको पार्टनर बनाएंगे तो कैपिटल देगा वो। अगर कैपिटल नहीं देगा तो प्रॉफिट शेयर कर सकते हो उसके साथ में, उसको बोल सकते हो प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतना ऐसा प्रॉफिट में देंगे, बट ही विल नॉट बी द ओनर ऑफ द असेट्स, है ना। असेट शेयर करोगे क्या आप उसके साथ में साईराम? विल यू शेयर वो द सर असेट्स? नहीं करेंगे। ओके, सो don't deviate from the main topic, no, let us continue with this same topic. So what we were discussing, that a new partner brings capital and new partner brings goodwill or premium for goodwill. New partner brings capital to share the assets of the firm, and new partner brings goodwill or premium for goodwill to share the profits of the firm. Okay, that is the first thing. Now you note down what accounting problems do arise at the time of change in profit sharing ratio, है ना, or what accounting adjustments we have to make at the time of change in profit sharing ratio. How much time is left? Let me share the screen. Time is left. Okay, 10 minutes are there, so let me share the screen. Oh, sorry. Present now. Chrome tab. Okay. I want whiteboard. Time now. Okay. Okay. Again, I have to log in. Okay, I am logging in. So wait for a minute, then we will be there.
accounting for not profit organization, reconstitution of partnership, and in reconstitution I need admission of a partner. Where is the admission? Okay. Let us open this. I don't need it, I need whiteboard. So let us use whiteboard, create new, and we need text. Okay, text is here. Okay, so let us read. Accounting problems. Ram, is it visible to all of you? Ram, Yes, for sir. adjustment at the time of admission of a partner. Hey Ram, someone's mic open, so please mute it. First problem is calculation of, note it, calculation of sacrificing ratio and new ratio. This is the first problem that we have to find out. And there is a change in profit sharing ratio. Is it clear? Calculation of sacrificing ratio and new ratio or new profit sharing ratio. Second problem that we have to do is the valuation of goodwill. Valuation of goodwill. This topic we have already discussed, है ना? Three methods जो आपने डिस्कस किए हैं, पता है ना सबको? Already discussed three methods. Yes, sir. है ना? कौन कौन सी मेथड डिस्कस की हमने? राम, Average profit. average profit method, super profit method, and capitalization method. These three methods we have discussed, है ना? They are same. Valuation of goodwill, methods of valuation of goodwill are same as we have already discussed. Okay. Third problem is the treatment of goodwill. Treatment of goodwill. This is the third problem. So we have to pass the accounting entries for treatment of goodwill. अभी हमने केवल एक ही adjustment entry की है, थोड़ा सा part कर चुके हैं. At the time of change in profit sharing ratio, we adjusted goodwill, gaining partners capital account debit to sacrificing. That up to some extent we have done, but we have to do it in more detail. Treatment of goodwill. Then next problem is the revaluation of assets and reassessment of liabilities. ठीक है, revaluation of assets and reassessment of liabilities. उसके बाद है this also we have done. पता ना आपको अभी revaluation account हमने बनाया था, राम, है ना? So it is also same. Yes. मैं डिस्कस जो हमने डिस्कस कर लिया वो मेथड वही है. बस अब क्या होगा, जो अभी प्रॉफिट एंड लॉस सारे पार्टनर्स में बांट रहे थे, अब केवल ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे. एक एंट्री चेंज होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की. अभी हमने बांटा था सारा प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ था रिवॉल्यूशन का, वो ऑल पार्टनर्स में.
और अब बांटेंगे केवल ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ना. सो दैट वी विल डिस्कस, बट बेसिकली इट इज सेम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट टू डेबिट एंड व्हाट टू क्रेडिट. Then distribution of reserves, accumulated profits, and losses. This also we have discussed, है ना. आपने अभी पढ़ा था, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, and accumulated losses are to be, so that also we have discussed. Entries are same, but now this will be done only for old partners, है ना. अभी all partners में किया था, अब केवल हम old partners में करेंगे, old ratio में. ठीक है. एंड 6 प्रॉब्लम थी हमारे पास. एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, okay. So this adjustment of partners capital is being deleted for this year, है ना. In the revised syllabus it is deleted, not in syllabus for session 2020-21. इस सेशन के लिए नहीं है, सिलेबस में हटा दिया अभी. Is it clear? This topic, adjustment of partners capital, is Yes, sir. deleted, so we don't have to study this. ठीक है. सर सारे चैप्टर्स में से सर पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स में सर. हाँ, एडमिशन में भी नहीं है, रिटायरमेंट में, डेथ में नहीं है ना. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया है. ठीक है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. हाँ जी. सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप, उसमें तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर ही नहीं रहे हैं वैसे भी, है ना. पूरा क्वेश्चन आता नहीं उससे, वैसे बैलेंस शीट बनाने को आती नहीं. इसमें आती थी तो इससे वो हटा दिया. उसमें भी नहीं है चेंज इन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, नहीं है कहीं भी, हटा दिया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, सारी जगह से हटा दिया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. यस सर. और बैलेंस शीट भी हटाई है, शायद बैलेंस शीट बनाने का भी नहीं बोला उसने इसमें. बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है, नई बैलेंस शीट नहीं बनानी है ना. आफ्टर एडमिशन जो नई बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो डिलीटेड, है ना. तो मैं देखता हूँ एक बार, मैं सही बोल रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया. नहीं आप लोग सोचोगे आपने बोला था हटा दिया, पढ़ा रहे हो. So this is here 12th class पार्टनरशिप. एनपीओ में तो कोई चेंज किया नहीं इसने, एनपीओ तो एज इट इज है ना. एडमिशन में लिखा है, उसमें उस पार्टनर का कोई मेंशन नहीं है इसमें, है ना. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले का मेंशन नहीं किया इसमें कुछ भी, जो सीबीएसई ने दिया है, डिलीटेड पार्ट का जो दिया है. एडजस्टमेंट एडमिशन में दिया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये वाला पार्ट डिलीट किया है. रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया है. और इसमें बैलेंस शीट का कुछ मेंशन नहीं, इसमें बैलेंस शीट बनानी है, मतलब विदाउट एडजस्टमेंट बनानी है. प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को हटा दिया है. एंड प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट को भी हटा दिया है इन केस ऑफ डेथ, है ना. डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना और एग्जीक्यूटिव अकाउंट नहीं बनाना, ये इतना पार्टनरशिप में डिलीट किया है. ठीक है. तो जो लास्ट वाला टॉपिक है पार्टनरशिप में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इट इज नॉट देयर, इट इज बीइंग डिलीटेड फॉर दिस ईयर. इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. साईराम. Yes, sir. यस सर. ऑन दीज टॉपिक्स, ऑल दीज टॉपिक्स कैन बी आस्क्ड सेपरेटली. ये सारे अलग अलग आ सकते हैं, है ना. 1 मार्क क्वेश्चन में, 3 मार्क क्वेश्चन में, सारे पे क्वेश्चन बन सकते हैं. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्वेश्चन अलग से आ सकता है. गुडविल का क्वेश्चन अलग से आ सकता है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आ सकता है. रिवैल्यूएशन का आ सकता है. रिजर्व का आ सकता है. एंड दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ वन सिंगल क्वेश्चन. तो एक सब पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, इन सब पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. और दूसरा, दीज आर द पार्ट ऑफ द मेन क्वेश्चन. ठीक है. तो वी विल सॉल्व दीज ऑल प्रॉब्लम वन बाय वन ना. क्या बोलते हैं उसको, बाय पार्ट. वी विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स बाय पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो, है ना. इज इट क्लियर साईराम? Yes, please. In the next class, we will start with calculation of sacrificing ratio and new ratio. And the meaning already we have discussed. What is the meaning of sacrificing ratio? All of you already know the formula of sacrificing ratio. That is, Nandini, क्या formula है? What is the formula of sacrificing ratio? Old share minus share
हाँ, very good. Old ratio है old share minus new share, that is the sacrificing ratio. So that much we have discussed, but in this condition we have many situations of sacrificing ratio and new ratio that we will discuss in the next class. Okay, Sairam, I am stopping presenting and coming back to the class. Okay, Sairam, now you can leave. Sir, After 10-20 minutes we will again meet. yes, sir. Sairam. साईराम सर। Sairam, Sairam. सर वो एक चीज पूछना था सर, वो कल एक न्यू पॉलिसी जो आई ना गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन में, कुछ चेंज हुआ है ना? हाँ जी, हाँ। वो अभी अपने लिए नहीं है, अभी तो पार्लियामेंट से पास होगा, पर वो आगे जाके जब गवर्नमेंट पूरा सिस्टम चेंज करेगी, नए है ना, सीबीएसई को सर्कुलर भेजेगी, सीबीएसई हमको भेजेगी, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत टाइम लगेगा। अभी आपके लिए कुछ नहीं है उसमें, आप तो अपना ये सिस्टम मान के चलो फिलहाल, तो जो 12th में तो यही अच्छा है, वैसे ही रहेगा। यस आगे चल सर। के 12th नहीं रहेगा, आगे चल के उसमें दिया है ना 5+3+3 है, तो 11th आ जाएगा, है ना, 11th बोर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़े हैं Yes. सिस्टम में, वो आ जाएगा, हम उसी में पढ़े हैं पहले, ठीक है सर। है ना, ठीक है। हाँ। कार्तिक, 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 मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ और कोई नहीं है ना मीटिंग में? हाँ अपन दोनों बचे हैं ना, कि तेरा भी लॉग आउट हो गया था। हाँ